morning, everyone. This is the sum we will be doing in front of your screen. M Limited provides the following information for the year ended 31st March 2017. Excise duty paid is given. This excise duty is paid during, this is a tax, this is a duty tax which is paid within the country on production or sale of goods. So this we will minus from our sales. So the excise duty is produced on manufacturing of goods, so and sale. So this will be minus from our sales. Sales से minus करेंगे. Net loss on sale of investment. इन देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो उस या लॉस, हम क्या करते प्रॉफिट में से लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करते. सो दिस विल कम इन अदर इनकम. प्रॉफिट ऑन सेल में से लॉस ऑन सेल माइनस करते हैं. देयरफॉर दिस विल आल्सो कम इन अदर इनकम. देन रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस. जब हमने रेंट रिसीव किया तो रेंट को रिसीव करते वक्त if we have hired someone to collect the rental money on our behalf, we have paid that collection expenses we have incurred. So rent agar received hoga, see, I will see there is rent received in this sum, therefore there is collection. Rental income is there here, see, there is a rental income here. So जब हमने रेंटल इनकम रिसीव किया, सब हम रेंटल इनकम को रिसीव करने के लिए हमने ये कलेक्शन एक्सपेंसेस इनकर किया. रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस बिकॉज वी मस्ट हैव हायर्ड समवन टू कलेक्ट द, या वी हैव टेकन सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू कलेक्ट द रेंटल इनकम, रेंट इनकम. सो दैट कलेक्शन एक्सपेंस हम रेंटल इनकम में से माइनस करेंगे. एंड रेंटल इनकम इज ऑल्सो अदर इनकम. Then we have opening stock of raw material consumed. Then we have opening stock of WIP, opening stock of finished goods. Opening stock of WIP and opening stock of finished goods will come in changes in inventory. So opening stock minus closing stock we will be doing. Opening stock minus closing stock and we will get the amount. Opening stock minus closing stock. Then purchase of material, raw material consumed. Salary and wages employees को देते हैं तो employee benefit expense. Contribution to PF also is related to employee benefit expense. Expense on employee stock option scheme, ये भी employee से related है. Employee benefit expense. Staff welfare is also related to this one, employee staff. So that will also come in employee benefit expense. फिर interest, कोई भी type का interest is finance expense. Borrowing cost also is to borrow the finance. So that will also come under the finance cost. It will also come under the finance cost. Then we have building. This is the fixed asset. ये हम we are preparing. यहाँ पे हमें क्या prepare करने बोला है? One time let us see, because fixed asset, building is a fixed asset and it comes in balance sheet. So they have asked us to prepare profit and loss account. They have asked us to prepare profit and loss account and the note of computation of surplus in the profit and loss account to be taken to the balance sheet. So हमें क्या करना है? We have to prepare only the profit and loss account and एक note to account बनाना है surplus का. Reserves and surplus में reserves are all the reserves and surplus means profit and loss account का जो last year का balance, current year profit and less appropriation. That note also we will have to show. तो ये फिक्स एसेट हमारे लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन. सिर्फ अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया रहेगा
तो वो कैलकुलेट करने के लिए वी विल रिक्वायर दिस बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ब्रांड, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। ये डेप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन के लिए हमें हेल्प करेगा. Prepaid expense, when given in the trial balance, directly comes in the asset side. Prepaid expense directly asset side में आता है. When comes in the trial balance, so this we'll have to ignore because हमें balance sheet तो we need not we have not been asked to prepare the balance sheet. So prepaid expense we will have to ignore. इंट्रीम डिविडेंड, डिविडेंड जब पे करते हैं तो इट इज अप्रोप्रिएशन, और हमें यहाँ पे सरप्लस का नोट प्रिपेयर करने बोला गया. वी हैव टू प्रिपेयर द नोट ऑफ सरप्लस. सो देयर अप्रोप्रिएशन में इंट्रीम डिविडेंड विल कम बिकॉज डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड दैट इज known as appropriation. Interim dividend means in between the two AGMs जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करके ऑन द स्पॉट पे करते हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड. दैट इज आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन. डेटर कम्स इन द बैलेंस शीट. देन वी हैव पेमेंट टू ऑडिटर, अलग से हेड नहीं है तो अदर एक्सपेंसेस में इट विल कम. सेल ऑफ प्रोडक्ट्स is sales, sale of services is sales. Trade commission, commission related to sales. So here this will be a direct income, revenue from operation. देखो normally सिर्फ commission होता तो हम other income में दिखाते, but it is trade commission related to operations. ट्रेड मतलब बिजनेस कमीशन रिलेटेड टू बिजनेस. हमारा ये डायरेक्ट बिजनेस होगा तो रिसीव कमीशन. सो दिस विल कम अंडर हमारा जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. दैट सेल ऑफ प्रोडक्ट विल कम, सेल ऑफ सर्विस विल कम, ट्रेड कमीशन रिसीव विल कम. तो ये तीनों एंड एक्साइज ड्यूटी पेड हम इनमें से लेस कर देंगे. सो देन वी हैव इंटरेस्ट इनकम, इट इज अदर इनकम. Dividend from companies, dividend from companies again is other income. Rental income is other income. We are receiving dividend from the companies where we have done investment. So rental income में से collection charges minus करेंगे, collection expense. Gain from foreign currency, this we will treat foreign currency transaction and translations. This is a gain, income. ये हमें gain हुआ है, but here what we can do, this gain को we can take under, हम लोग other income में ले सकते हैं, अदर इनकम में ले सकते हैं, या एक और जगह वी कैन टेक दिस, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट में. ब्रैकेट में वी कैन शो, फाइनेंस कॉस्ट में ब्रैकेट में वी कैन शो दैट दिस इज रिलेटेड टू द बोरोइंग्स, देयर इज अ गेन. व्हेन वी हैव बोरोड देयर इज अ गेन. देन इक्विटी, 50 lakh equity share capital, P&L account, opening balance. देखो 50 lakh equity shares of rupees 10. There are two class of equity shares. One 50 lakh equity shares of 10 each, 8 paid up, and another 60 lakh equity shares of rupees 10 each. लेकिन हम तो we are only preparing profit and loss account. This comes in the balance sheet. So यहाँ पे we are not preparing balance sheet. We'll have to ignore this. P&L account, opening balance, because हम surplus बनाने वाले, वहाँ पे this will help us. 10% 70 lakh preference shares. This will also not come because हम balance sheet नहीं prepare कर रहे. General reserve, debenture, all are balance sheet items. So ये तो हमें balance sheet नहीं prepare करना है. So we will be ignoring all of this. Provision for doubtful debts in the trial balance. This is old RDD. Provision for doubtful debts, old RDD. Consumption of stores. This इसके लिए अलग head नहीं है. So it will come under other expense.
पावर एंड फ्यूल के लिए भी दूसरा सेपरेट हेड नहीं है, so that will also come in under other expense. Rent also will come under other expense. Repairs to building, other expense. Repairs to machinery, other expense. Insurance, other expense. Rent, other expense. Then we have rent and taxes, other expense. Miscellaneous expenses, other expense. So जिसका भी specific head नहीं है, that will come under other expense. Then we have additional information, closing stock, material का less from material consumed, WIP, changes in inventory of WIP, finished goods ओपनिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स. जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, depreciation, there is depreciation in building, plant and equipment, vehicle, फर्नीचर, फिक्सचर, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब में डेप्रिसिएशन है. सो ये सब तो ये अमाउंट तो नहीं आएगा, बट इनका डेप्रिसिएशन विल कम. देन पेमेंट टू ऑडिटर जो है, देयर इज अ बाइफोकेशन इन दैट. पेमेंट टू ऑडिटर 16 लाख को डिवाइड किया गया है कि एज ऑडिटर 5 लाख, टैक्सेशन मैटर 4 लाख, company law matter 3 lakh, for management services 2 lakh, for other services 2 lakh. So देखो सबको ऐड करके 16 लाख आता है क्या? सबको ऐड करो, are you getting 16 lakh? 5 lakh plus 4 lakh is 9 lakh, plus 3 lakh is 12 lakh, plus 2 lakh is 14 lakh, अदर सर्विस के लिए 2 lakh is 16 lakh. So ये 16 lakh को कैसे ऑडिटर को कौन से चीज काम के लिए how much money has been given, that bifurcation is given. So we will have to also show a bifurcation in payment of auditor for taxation matter, company law matter, management services, other services, how whatever it is given. फिर provision for doubtful debts at 10%, debtor पे there is a doubtful debts. So वो हम लोग जब doubtful debts निकालेंगे, so debtor का 10% निकालना पड़ेगा. Directors recommended this is appropriation, transfer to debenture, redemption reserve 25% of debentures, and transfer to general reserve is 5%, income tax is 30%. Now we can start with the sum. They want us to prepare profit and statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2017, and we have to also prepare a note showing the computation of surplus in the statement of profit and loss to be taken to the balance sheet as per Schedule 3 to the Companies Act 2013 as on that date. So we have to prepare two things. One, statement of profit and loss. Second, we have to prepare the surplus. Notes to account में surplus का computation calculation we will have to show. So सबसे पहले what comes A, revenue from operations. So let us go to the first note, revenue from operation. So यहाँ पे एक से ज्यादा है, सिर्फ sales directly नहीं दिया. They have given the bifurcation. Sale of products, sale of services. So more than one item, we have to prepare the note of it also, of this also. So let us see sale of product, sale of services, ऐसे करके differentiation दिया है. The sale of product, sale of services. How do we have discussed the question now? तो वहाँ पे we have already seen. देखो, sale of product 1350, sale of services 15. Everything is in lakhs. So 1350 and 15. So what I will do here? 1350, 15. And then here it is in lakhs.
So here also we can write in bracket amount in lakhs. Amount in lakhs. Then what is there? Trade commission received. Operating revenue, operating incomes. Here it is a operating income, business related income, operating income, that is trade commission received. Trade commission received, which is how much? Again, we will have to see. The amount is 30 lakhs. 30 lakhs. And इसमें से we will less, that is first item which is given, excise duty paid 92.2. $92.5, sorry, 92.5 it is. Minus karo, how much you are getting? 2.5. So we will write amount in lakhs है 1302.5. Next one, second one, other income. So now we will do for other income. Let us write here P, other income. Note number 2. So other income में, what all other income we have? We have already read there is one net loss on sale of investment. Profit में से loss less करते, rental collection is there, जो rent income में से minus करेंगे. Then here interest income, dividend from companies, rental income. We can also take gain on foreign currency. या तो this we can also take on borrowing cost. I mean finance cost. So let us start here. What is that? Interest income. What is the amount of interest income? 10. Dividend from companies 5. 10. Dividend from companies is 5. Then what we have incomes? We have rental income, जिसमें से rental collection expense minus करेंगे 7.5 minus 0.5. Rental income इसमें से less collection expenses कितना है? 7.5 minus 0.5. So it will be 7. Then what we have? Then we have loss on sale of investment. Profit होता तो भी इधर ही आएगा और लॉस होगा तो भी इधर ही आएगा.
बिकॉज देयर में बी प्रॉफिट ऑल्सो, देयर में बी लॉस ऑल्सो, दोनों रह सकता है. प्रॉफिट में से लॉस माइनस करते हैं तो इनकम में से लॉस ऑन सेल एडजस्ट करेंगे. Will adjust from the incomes. Loss on sale of investment. What is the amount of loss on sale of investment? It is 2. Loss on sale of investment is loss है तो bracket में we will show it is 2. Now if we want, we can one more thing we can put here, gain on foreign currency transaction and translation. That is also we can consider it income, or we can also take it in finance cost. So let us now take it in finance cost in this 4. So now what we will do, take the amount how much we are getting, 10 plus 5 plus 7, 22 minus 2, we will get 20. So we'll write here other income is 20. So we will get the Roman 1, that is total revenue, which is equal to 3.3, no sorry, 322.5, 1322.5, correct? Now we will go to the expenses, less expenses, and the first one is cost of raw material consumed. Cost of material consumed. Here this will be note number 3. Note number 3, cost of material consumed. Here for that we want opening stock of raw material. Opening stock of raw material is how much? 42.3. Then we have purchase of material 477.6. So यहाँ पे opening stock of raw material is how much? Opening stock of raw material is 42.3, and here we will add, this much will not be sufficient. Purchases of material is 477.6. Now, do we have any other expense? Freight, carriage related to material? No. Anything else related to material is not given, but we have closing stock related to material, that is 19.9 lakh. So what we will do, we will less closing stock of raw material. How much it is? 19.9. We will get our raw material consumed 500. After this, we have next one be changes in inventories. For this changes in inventories, we do opening stock less closing stock. So WIP and finished goods का 2 है. So what we will do,
changes in inventories. First, for WIP, opening stock of inventories of WIP less closing stock of inventories WIP, ये हो जाएगा. नेक्स्ट फिनिश गुड्स है. फिनिश्ड गुड्स तो उसका भी हमें सेम लिखना है, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. बस यहाँ पे what changes will happen, this will become finished goods. Now we want to know the amount. Let us know the amount. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 75 फॉर WIP, 87.5 फॉर फिनिश गुड्स. वो यहाँ पे 75 ने लेस करना है क्लोजिंग्स, वो बाद में करते, पहले इधर का भी लिख लेती हूँ. 87.5. नाउ लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक कितना है. 100, 200. ये 100 है, ये 200. So how much difference we are getting? Here difference is coming bracket 25 because bracket amount closing stock is greater. Closing stock का amount ज़्यादा है. Here it is coming 112.5. The total is coming 137.5 but within the bracket. तो हमारा changes in inventory WIP का 75 minus 100 is minus 25. Finished goods का 87.5 minus 200 is 112.5. Add both of them 137.5 but within the bracket because closing stock is greater. So minus में it will come. Now next one, employee benefit expense. Employee benefit expenses, whatever related to employees there, everything we will write. So we'll go to the next note, note number 5. What is it? Employee benefit expenses. So here, let us see what all related to employees are given. क्या क्या एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेश्चन में दिया है. व्हाट इज गिवन? सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉयमेंट, स्टॉक ऑप्शन, वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, सब कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड है. सो सबका कॉपी करके आई विल So let us now write the amount. Let us write the amount. 336, 14 and 75. Salaries 300. PF contribution is 36. Employee stock option is 14. And staff welfare is 75. सबको ऐड किया
how much we are getting? 425. 7 right here. 425. Now our next one is finance cost. All type of interest, borrowing cost. So क्या करेंगे? Interest, borrowing cost, both are there. And there is gain, which is a profit. जो वो bracket में बताएंगे, expenses लिख रहे. So what we will do next letter, we have to prepare sixth note. Note number 6. Finance cost. Finance cost. Here we have interest, expenses, borrowing cost. In bracket they have given brokerage. What is the amount? Interest expense, other borrowing cost 12 and 2. And we have also have this one, 4. So here 12. This is other borrowing cost. 2. This is 2. And this one is gain. So bracket में gain, bracket में बताइए expenses का side है. This becomes 10. 14 minus 4, 10. Now next one is depreciation and amortization expenses. So this will be our 7th note. Seventh note, depreciation and amortization expenses. So इसमें क्या क्या है? See, they have given the percentage also. Building 5%. Building pay 5% depreciation. 200 का 5%. One by one, let us do. Building is 200 lakh. Iska 5% is the depreciation. So 200 का 5% निकालो, how much it is coming? 10. तो यहाँ पे 200 lakhs है. So ये भी 10 lakhs है, but हमने ऊपर वैसे ही लिख दिया है amount in lakhs. Here we have written amount in lakhs. Now depreciation. Building के बाद we have plant and equipment 20%. Plant and equipment is 100 lakhs. 100 lakhs का 20%. We have to find out plant and equipment. Plant and equipment 100 lakhs का 20%. We will get 20 lakhs. Now we have, after this we have vehicles का 20%. Vehicle is 25 lakh. Vehicles का 20%. So here we will write vehicles, which is
20 lakhs का how much percent? This 20%. So how much is this coming? 20% of 20 lakh. 20 lakhs or 25 lakhs? 1 minute. Is 25 lakhs. Vehicle is 25 lakhs ka 20%. Then we have furniture and fixture. Furniture and fixture is how much? Furniture and fixture is 10% of 30 lakhs. ये आंसर आ जाएगा 5 lakhs. इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर इज 30 lakhs का 10%. This will be 3. Then we have brand 10%, computer 60%. Brand is 100 lakhs, computer is 45 lakhs. Brand and computer software. So we have two things. Brands, $100 lakhs का 10%, which is 10 lakhs. Then we have computer software 60% depreciation, but amount is 45 lakhs ka 60%. So how much this is coming? 27 lakhs. 45 lakhs ka 60%. Now add all of this. Add all of this 10, 25, 3, 35, 3, 38, 48 and 27, 48 and 27. We are getting 75 lakhs. Depreciation we have got 75 lakhs. Now last हमारे पास है, that is other expenses. Other expenses we have 8 to note. Note number 8. 8 other expenses. So now we will see जो भी कुछ other, जो भी कुछ कोई भी हेड में नहीं आ सकता, बट ध्यान में रखो यहाँ पे बैलेंस शीट के चीजें भी दी है. वी वांट ओनली द रेवेन्यू आइटम्स. सो व्हाट इज दैट? जो कि P&L अकाउंट में आता है, दैट जो बच गया, दैट एवरीथिंग विल कम हियर. ये हो गया लिख के. दिस एवरीथिंग इज डन. Borrowing, this is done. Prepaid expense comes in the balance sheet. Interim dividend reserves में surplus में आएगा. Appropriation का item debtor comes in the balance sheet. Payment to auditor, there is a note also in it, 16 lakh. Payment to auditor, इसमें बहुत सारा bifurcation दिया है. So we can write here payment to auditors. क्या है payment to auditor? Go to the note and they have told payment to auditor includes auditor 5 lakh. ऑडिटर को उसके सर्विसेज के लिए 5 लाख दिया है. सो यहाँ पे वी कैन राइट ऑडिटर को उसके सर्विसेज के लिए 5 लाख है. फिर ऑडिटर को for taxation matters, for taxation matter 4 lakhs. So यहाँ पे for taxation matter 4 lakhs and for law matters 3 lakhs. For law matter 3 lakhs दिया है उसको. $3 lakhs and
For management services 2 lakhs. For management services 2 lakhs. And other services. For other services also 2 lakhs. $2 lakhs. So now ये सबको add करो, you will get 16 lakh. You've already added everything. ये सबको थोड़ा आगे लेती हूँ मैं, because मुझे 16 लाख का टोटल इधर लिखना है. ये बाइफोकेशन है अदर एक्सपेंसेस में. ये सबको ऐड किया, इज कमिंग 16 लाख. अब क्या है, नाउ व्हाट एल्स इज देयर व्हिच विल कम इन अदर एक्सपेंस. पेमेंट टू ऑडिटर हो गया, वी हैव रिटर्न. ये तो ऑपरेटिंग इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम. ये इक्विटी शेयर comes in the share capital, reserves and surplus. This is also comes in the balance sheet. Long term borrowing, provision for doubtful debt is there, old one. वो बाद में जब adjustment में आएंगे तब करते हैं. But all this will come in other expense. Consumption of store parts, power and fuel rent, repair to building, machinery, insurance. Everything will come in other expense. So let us write other expense. So now we have wanted amounts. We want their amounts. So let us see, and then we will write how much it is. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 1. So ये line से we will write how much it is. 7. Consumption of store and parts is 7. Power and fuel is 8. And 5, rent is 5. Repairs is 4. 4. This is 3. 4, 3, 2, 1, 1 ऐसा था ना. 2. This is rent and taxes is 1, 1. Miscellaneous is also 1. ये सब लिख लिया. अभी एडिशनल नोट में भी कुछ कुछ है अदर एक्सपेंस जो कि हमें अभी लिखना पड़ेगा. सो लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर. पूरा लिख लिया, बट व्हेन वी गो टू द नोट्स, डेप्रिसिएशन का हो गया, पेमेंट टू ऑडिटर का हो गया, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डेटर पे डाउटफुल डेट्स निकालना है. 40 लाख पे 10%. And there is old RDD also 1 lakh का. There is old RDD also for 1 lakh. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मली हमारा प्रोसीजर क्या है, जो न्यू RDD है उसमें से लेस ओल्ड RDD करते. लास्ट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन is 10% of debtors, 40 lakhs. So let us write this new RDD. This is provision for doubtful debts for doubtful debts. How much it is? 40 lakh is the debtor. उसका कितना परसेंट? 10%, which is equal to 4. जिसमें से -1 करेंगे, which is what? Which is old RDD. So हमें कितना मिलेगा? 4 minus 1, that is 3. This is done. क्या बोला था? Make provision for doubtful debts 10%. Debtor which is 40 lakh उसका 10%.
हम लोग RDD करना है, that is coming to 4, but there is one old RDD of 1 lakh. ओल्ड RDD माइनस करेंगे, 4 minus 1 is 3. ये तो बाद में करना है, ये बाद में करना है. सो नाउ मतलब वी हैव डन एवरीथिंग. तो अभी देखो टोटल कितना आता है, ये तो हम नोट में करेंगे. तो दिस अप्रोप्रिएशन का इंफॉर्मेशन गिवन से सबको आर करके देखो हाउ मच इट इज कमिंग. इट इज कमिंग टू 50. सो वी विल राइट डाउन हियर 50. तब ये पूरा एक्सपेंसेस हो गया. तो अभी हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे. टोटल एक्सपेंसेस कितना आया वो निकालेंगे. 500 minus 137.5 plus 425 plus 10 plus 75 plus 50, we are getting 922.5. तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स which is 1 जो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस. 1322.5 minus 92.5, we are getting 400 lakhs. इसमें से लेस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस. प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज अ नोट. कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, 30%. 30% आ रहे हैं ना. देखो ये करो, 1322.5 minus 922.5, we are getting 400. अब टैक्स है 400 का 30%. देखो how much it is coming, 400 का 30%, it is coming 120. So this one is profit after tax या profit or loss for the period. How much is it coming? 400 minus 120, it is coming to 280. So profit or loss, profit for the period is 280. This is done. लेकिन हमें एक और चीज यहाँ पे प्रिपेयर करने को बोला है. That is हमें we have to prepare surplus. So we have to prepare a note showing surplus, computation of surplus in the statement of profit or loss. So we have to prepare computation of surplus. We have to prepare a note showing the computation of surplus. So this is the second part. यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर करना है, नोट showing the computation of surplus. So ये computation of surplus क्या है, reserves and surplus हम साथ में लिखते हैं, जिसमें reserves में all reserves come, general reserve, capital reserve, all the reserves. Now in the surplus we write only profit and loss account. So profit and loss account जब हम लिखते हैं, profit and loss account में सबसे पहले we will write the opening balance. Opening balance means last year का closing balance. Last year का closing balance. So that is given opening balance of P&L account. The question देखो, opening balance of P&L account 1/4/2016. This is 31st March 2017. यहाँ पे दिया हुआ है 226 lakhs. 226 lakhs is given. So वो लिखेंगे 226. एंड इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट. आर we will do profit for the period which is 280 lakhs. हमें अभी अभी मिला 280 lakhs. Just see here, 280 lakhs is the profit for the period. So ये
ये दोनों को आर करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट पता चलेगा कितना है। इसमें से हमें क्या लेस करना है, ये दोनों में से हमें लेस करना है। दोनों को आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी हाउ मच, 506। सो इसमें से लेस करेंगे एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस क्या दिया है क्वेश्चन में, एप्रोप्रिएशंस दिया है इंटरिम डिविडेंड, फिर क्या दिया है, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट भी देख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड 50 lakhs and they have given transfer to debenture redemption reserve 25% of debentures. debentures कितना है, 100 lakhs है, उसका 25% and transfer to general reserve 5%. जब हम लोग व्हाट इज अप्रोप्रिएशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द ओनर्स। ओनर्स है शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड दिया, फिर ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विच इज हाउ मच, डिबेंचर का दैट इज डिबेंचर इज 100 lakhs, उसका कितना परसेंट ट्रांसफर करने बोला है, डीआरआर में कितना परसेंट है, 25% ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स इज 100 lakhs, 25% एंड 5% जनरल रिजर्व। सो करो 25%, दिस इज कमिंग टू 25 lakhs and then last जो हमें बोला है that is transfer to general reserve 5%, 5% ट्रांसफर करना है, पर क्या करंट ईयर प्रॉफिट का 5% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। करंट ईयर प्रॉफिट इज 2,80,000, so how much is it coming, it is coming to 14। सो ये सब लेस आइटम्स है, एप्रोप्रिएशन है, इतना पैसा हमारा प्रॉफिट का कम होगा क्योंकि हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे, वी आर डूइंग एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ओनर्स को डिविडेंड, एंड बाद में अलग अलग सेविंग में पैसा डाल रहे, तो 50 + 25 75 हो जाता है, फिर +14, तीनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 89। अब माइनस करो, कितना अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में आएगा 506 minus 89 which is equal to 417। This is the final account, that is this is the note of surplus, this is the note of surplus which they have asked us to prepare. With this sum is done. Thank you very much everyone.